Madam coached the international judge the, and is a great administrator too. At the sport level, Madam received various distinctions. International, she received in 2006 the Gold Medal of Honor given by the International Council of Health, Physical Education, Recreation, and Dance. And in 2013, a member of honor of the WASM World Association of Sport Management, invited professor at the Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexico, West Germany University, USA, and various national universities in Venezuela. Ma'am is currently advisor of the Ministry of Education for a national training program for teachers in service in areas of English, foreign language, and physical education. Reviewer of quality physical education projects by UNESCO. Responsibilities. Some of the madam's responsibilities at international organizations are. Madam is the president of the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women, and treasurer of the WASM, World Association of Sport Management, 2016 to 2021, Vice President of the International Society of Comparative Studies in Physical Education and Sport, 2008-21, at XP Chair of ICSP, 2008-12, Editorial Board Member, 2008-16, Board Member, 2012-20, Founder of the President of the Latin American Sport Management Association, 2009-2015, Former Secretary of the Latin American Association for Socio-Cultural Studies, 2008-14. मैडम आई ऑलवेज से प्रोफेसर रोजा, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहती हूँ हम लोग बहुत लकी हैं जहाँ प्रोफेसर रोजा जैसे मैडम जो प्रेसिडेंट है इपास्कोवे की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट है, जो विमेन और गर्ल्स का है उनकी प्रेसिडेंट है। हमारे पास हम बहुत भाग्यशाली जो हमें मैडम मिली कि मैडम ने ये इसको एक ग्लोबल इवेंट बना दिया जहाँ हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पे करीब 60 से ऊपर हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर्स रह चुके हैं। And ma'am, I think it's you who's made it truly go global, and when the president does that, something which is great because it's the president of the IPASCOE going to take the first session among the international speakers too. Over to you, ma'am. And ma'am, I think I'll have to translate a bit in Hindi in between. So how do we start? You could let us know. I also would like to welcome Dr. Ruth Crabtree, who's the Vice President of WASM. आप सबकी जानकारी है कि हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भी हैं, मैडम रुथ हैं, और हमारे पास रोजा डिकिट मिलर है जो वाइस प्रेसिडेंट IPASCOE की हैं, मैडम ऑस्ट्रिया से हैं, रुथ मैडम यूके से हैं। तो a warm welcome to Dr. Ruth, Dr. Rosa, Dr. G. Kishore sir, and all my dear PE teachers. Once again, a warm welcome to you. Over to you, Rosa ma'am, for your session, please. Hello, nice to share with you all. What a pleasure and what a privilege indeed. Okay. And Madam Rosa, hope you see now we have reached almost 7,700 PE teachers. Women PE teachers are on. We had more than 8,000 of them, but we have nearly 7,700 PE women teachers from across the country. Wow, that's what a privilege indeed, as I said before, because first of all, to be honored in this first session, to be also part of the historical moment in which you are participating together with two dignitaries from the government of India, and of course for this wonderful audience. I mean, it is indeed fantastic, and what a better occasion than the date of the International Women's Days. I celebrate and congratulate you all, and also special thanks to my fellow board members, Ruth and Rosa, because we both share in two boards. So it's fantastic that you can make it and be here for this inaugural session and a historical one. It was indeed very challenging when I was requested to open this session after the two dignitaries and of course the words of Dr. G. Kishore on how to address this particular one on a topic that I think in 2020, I spoke like 4 or 5 times to the India audience. And in spite of the fact that I will repeat some of the information I have said before, I think we have to insist because there's always newcomers, and we also had advantage to do it in a pedagogical way that by repeating more, we will have more people. So I will start by saying with the slogan, I choose to challenge that women and girls should be empowered in physical education, sport, and physical activity.
And I know that it is not I, but also it's Yapescabe, it's Wasan, it's all the organizations that we struggle and we push to make women's being there and being respected as human beings. Now, मैंने I अभी don't know. मैसेज दिया था कि I choose to challenge के एग्जाम हमें सबको हम सबके मैडम ने मैसेज दिया है हम सबको चैलेंज करना चाहिए कि हम शारीरिक शिक्षा और खेल के द्वारा हम कैसे बेटियों की और महिलाओं की हम उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं इस तरह से मैडम मैसेज दे रही हैं और मैडम आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैडम अभी 4:30 बजे से मैडम सुबह 4 बजे से मैडम हमारे साथ बैठी हैं हमारे साथ शामिल हुई हैं and our PE teachers are very smart because morning we put a lot of things they all mention the same. Thanks, Rosa. How do we start? You want the question? Okay, I will start with the questions. Yes. So these questions are for you. I would like you to just answer yes or no. Okay. So this is part of our challenge today. So please, could you show the questions? मैडम ने अभी बोला कि मैडम की सेशन की शुरुआत मैडम एक क्वेश्चन डाल रही है आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको where there is the answer here yes. आप उधर आंसर डालिए जरा आप सारे पार्टिसिपेंट्स उसी में क्लिक कीजिए सबसे पहला जब क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं को खेल में भाग लेना चाहिए तो उसमें गुड वेरी गुड और आपको क्या लगता है महिलाएं खेल में भाग लें और आप तीसरा है आप जो बच्चे हैं बेटियां हैं उनको आप प्रोत्साहन करेंगे खेल में तो तीसरा क्वेश्चन है You're answering good. I think you can see the screen, Dr. Rosa. Yes. It's good. Good. I'm happy. All of very smart. Our teachers are very smart. They all are clicking on giving in the answers too. Okay. So they're responding. Sometimes. So yes, the first answer is yes. About 0.58. It's about 33% have voted. Yes. And the second one also is yes. Okay. The third one also is yes. And fourth one also, I think it's yes. That's a big yes. Okay. So from this session, we are going to have a declaration. So we start this session by saying we choose to challenge. And we challenge these 4 answers, okay, already. So all this group, and I would like Dr. Usha and Dr. Ruth and Dr. Rosa Dickmuller to help me because we are going to have this declaration from this session, from this batch, like we choose to challenge because we believe girls can participate in school, girls can be women leaders. I mean, all the answers that you have given. So thank you very much for that. And we will continue, okay? I will ask you later another question and I would like you to write in the chat box. Okay, now I want to go with the first video, please. The first video, please. अभी मैम second video share कर रही हैं, तो आप participants please observe करना है. And peacekeepers. But while they have an empowered role in our societies, to this day, women and girls are still forced to fight for their rights. How much progress have we achieved? And how much work remains? How can you carry on the fight for equal rights? Women's struggle for equal rights is centuries old. But 1848 marked a watershed moment for women's rights with the Seneca Falls Convention, where women activists publicly petitioned for their civil, social, political, and religious rights. In 1893, New Zealand sent a message to other activists across the world that equal voting rights were achievable through advocacy. Entering the 20th century, women around the world are mobilizing in ever greater numbers to campaign for gender equality. Just as women's role in the labor force is rapidly evolving by opening up options beyond caretaking roles. In 1945,
The United Nations is formed in response to the destructive toll of 2 world wars, and Eleanor Roosevelt oversees the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. For all the world to hear, she and other advocates underline the place of women's rights within. This sets a foundation for women's rights norms and standards at the international level. In the subsequent decades, just as women are taking historic leadership positions in government, women activists at the grassroots level dovetail with the worldwide momentum by becoming powerful symbols of feminist resistance and social change. This momentum reaches a climax in 1995 when the Beijing Declaration and Platform for Action presents a visionary global agenda for women and girls' rights. But in spite of all the progress, as we enter the 21st century, patriarchal stigmas persist and exemplary leaders arise to resist them. With the rise of the digital age, social media emerges as a crucial tool to galvanize populations in the fight against injustice. A single woman's voice is now louder than ever. Grassroots activists trigger social movements online and offline, from cities to villages, inspiring future generations of women and girl leaders. After relentless campaigning, these movements generate changes in policy that signal a true shift in international attitudes and practice towards equal rights. Where are we now? A quarter century after the Beijing Declaration, women and men must mobilize together to overcome the remaining obstacles to gender equality. They must fight for an end to gender-based violence, for access to healthcare, for equal pay, and for equal participation in political life. The ink isn't dry. Be a part of generation equality and let us continue to write history together. Okay, so now I will share my screen to share some few ideas and comments, and I will take advantage that Dr. Usha helped me with some translation in Hindi, okay? So once more, I want to say that I'm privileged to be part of this, particularly in this very important day. The video that you just saw was a short history, as I said, in 3 minutes, about the history of the movement until 2017, okay? That was done by the UN Women Group. And in 2017, the biggest campaign was She for Her. And now at this moment, okay, we are in another historical year in which it has been chosen, choose to challenge. And this is the slogan that we have for this year, okay? So again, congratulations to you all, and to your sisters and to young sisters, to your wife, to your partners, to all those who surround you and nurture you, okay? And of course, I have to say congratulations to India, because sometimes in some places we see just Minister of Women and Gender Issues doing activity separately from sport. And this union with the Ministry of Youth Fair and Sport and the Ministry of Women and Child Development, I think is fantastic. So congratulations for this initiative, and I hope you continue moving forward. I know changes are not easy. It takes a while, but you are starting by having those two, because as I said, in many places, there is no chance. I mean, you don't get both of them celebrating the same day and launching a campaign, for example, like this one. Say that, Madam Rosa? Yes. मैं बता दी कि ये जो हमारी जो स्त्रियों की जो सशक्तिकरण है खेल और शारीरिक शिक्षा द्वारा, जो अभी आज अंतर्राष्ट्रीय वनिता दिवस पे ये देखा है कि मैंने कहा कि दोनों मिनिस्ट्री जो हमारे साथ आई है, ये हम लोग बहुत रेयर देखते हैं, ऐसा हमेशा कॉमन नहीं है, जहाँ हमें मिनिस्ट्री जो विमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट और यूथ अफेयर्स दोनों एक साथ आए हैं।
एक बहुत बड़ा इसकी वजह से ये हमारे जो वनिता की और बच्चों की सशक्तिकरण खेल के द्वारा को और ज्यादा मजबूत करती है। इसलिए मैडम कहती है बहुत अच्छा है जहाँ हम लोगों को ऐसे मौके में यूजुअली देखा जाता है कि ये लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ लेके आए, ये बहुत बहुत अच्छी है, जो दूसरे राज्यों को भी ऐसी सीख लेनी चाहिए। यस मैम प्लीज। Okay, so just briefly the structure. So I'll have to speak about women in society, documents in place, gender and sport, women's organization, and final comments, okay? So I have to mention, even though it was said in the short video, it is important to repeat so we get to know what the situation, historical situation of women in history. So in the century, 17, some start to condemn women's violence and to believe the idea that women are not an object or a property of a state. Women used to be considered legally, moral, and social in an inferior position than men. In mid-20th century, particularly at the end, some sanctions started to be applied to men who mistreated women by physical or psychological violence inside or outside home. This that I'm indicating is not just taken out of the blue or because I speak about the topic. I mean, this is based on facts, and these are historical, unfortunately, realities. मैंने पहले बताया इतिहास में महिलाओं की कुछ स्थितियों के बारे में मैडम ये सारी रिसर्च के द्वारा मैडम बता रही है, अनुसंधान करने के बाद। तो ये जो 17वीं सदी में कुछ लोग महिलाओं पर जो रहे हिंसा की निंदा करने लगे और इस विचार पर विश्वास करने लगे कि महिला एक वस्तु या राज्य की संपत्ति नहीं है। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी कानूनी रूप से नैतिक और सामाजिक माना जाता है। 20वीं सदी में मध्य में विशेष रूप से अंत में कुछ प्रतिबंध उन पुरुषों पर लागू किए जाने लगे जिसने घर के अंदर या बाहर महिलाओं पर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हिंसा करते थे। यस मैम प्लीज। So the discriminatory mistreatment became a collective social behavior. It is present in all social spheres and establishes silent codes and limits the way we are related to each other. So it became embedded in society and it was taken as a truth. So discrimination makes no difference between social or economical or cultural class, and stereotypes and the creation of judgment values are based on social prejudices. And this is, of course, a relation or just the history of years and years of having this view that women were inferior than men. अभी ये दोबारा मैम इसका कंटिन्यू कर रही है कि भेदभावपूर्ण दुराचार एक सामूहिक तौर पे और या सामाजिक व्यवहार बन गया। पहले हम बोलते थे अकेले, लेकिन सामाजिक की तौर पे ये सामूहिक तौर पे ये विषय चर्चा होने लग गया और ये सभी को सामाजिक क्षेत्र में मौजूद है और इसको स्थापित करने के लिए इसके लिए लेकिन कई सीमाएं हैं। भेदभाव सामाजिक बोलते हैं आर्थिक सांस्कृतिक वर्ग के बीच में कोई अंतर नहीं करता है, लेकिन जो हमारी कल्चरल वैल्यूज जो स्टीरियोटाइप्स है, जो रूढ़ियां हैं और जो निर्णय मूल्यों का निर्माण सामाजिक पूर्वाग्रहों पर आधारित है, क्योंकि हमारी जो कल्चर है उस पर आधारित होती है। यस मैम प्लीज। Okay, so I have to mention some benchmark that again, a few of them were mentioned in the videos, but it's important that for all of us, and particularly this session that is dedicated to women in sport and physical education, that we know where we come from. So the first element is the 1948 Universal Declaration of Human Rights. And it is from there in which some countries started to respect women in their societies. In 1949, the International Association of Physical Education and Sport, IAPESCAB, was created in order to support those women, particularly in those here, to push physical education in the school, in the education system. And in 1975 is the first UN Women's World Conference in Mexico.
अभी ये मैडम ये बता रही थी कि इसमें कई चीजों की जानकारी में बहुत जरूरी हम काफी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानकारी है? 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था मानव अधिकार का, वो 1948 में हुआ था, ये यूनाइटेड नेशंस का था। और 1949 में जो मैडम जिस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर गर्ल्स एंड विमेन, इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। ये 1948 जो मानव अधिकार पे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया उसके बेसिस पे स्टार्ट हुआ, लेकिन 1975 में जाके पहला दफा जो है यूनाइटेड नेशंस जो है अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड का जो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ जो मेक्सिको सिटी में था, उस समय इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान जो संस्थान खोला, जिसमें ये लोग देखते थे कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के आगे प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और उनका जो है डेवलपमेंट फंड जो है आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस तरह का विषय उस पर चर्चा किया था। ये था 1975 में। आप देखेंगे ये सारी जानकारी हमको बहुत जरूरी, क्योंकि हमें ये मालूम करना है इस हिस्ट्री में, स्पेशली जो महिलाओं के लिए कि कैसे चल रहा, कैसा उनपे कैसा था पहले। अभी हम जो भी सुख अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों को मेहनत करनी पड़ी। यस मैम, प्लीज। So the International Charter of Physical Education and Sport, this is how it started in 1978, and this was the first step forward for UNESCO to, in a way, require the countries in the world to include physical education in their education system, okay? There was an amendment in 1991, and in 2015, it was changed to the International Charter of Physical Education, Physical Activity, and Sport, in which the word physical activity was included, but other important terms and words were also included. Particularly, there was then, it indicates girls and women, boys and men, because in the past, everything was just, in the 1978, they speak just about boys. But in order to make it clear that inclusion is needed, so that's what in 2015, words, very important reference, are established and indicated there. So this charter, and for all those of you that don't know, you can find it in Hindi in the webpage of UNESCO, and it's our document, the document from which we start in order to, it's a policy, it's an international policy that has been integrated in nearly all nations. Perhaps it is still not fulfilled, but it is. Our nations have signed that, okay? अभी मैं बता रही थी अंतरराष्ट्रीय जो चार्टर है, घोषणा पत्र शारीरिक शिक्षा और शारीरिक क्रिया और खेल में, ये इसकी हुई थी 1978 में। यूनेस्को ने इंटरनेशनल चार्टर सिर्फ शारीरिक शिक्षा और खेल में बोला था, और उसका 1978 की बात है। उसके बाद इसको अमेंड किया था 1991 में, लेकिन जो 2015 में इन लोगों ने शारीरिक शिक्षा के अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक क्रिया को भी इसमें जोड़ दिया। लेकिन अभी तक इसमें काफी ये बताया, ये जो घोषणा पत्र में लिखा गया है कि किसी को भी हर एक मनुष्य को, वो लिंग हो, रंग हो, भाषा हो, धर्म, राजनीतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, किसी भी तरह से किसी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और सभी को अपने जैसे मानव अधिकार के तौर पे है, और उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी में अगर भाग लेना चाहिए उनको उसको वो छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है 2015 में 12 आर्टिकल्स दिए गए, और इसमें स्पेशली उसमें मेंशन किया है कि महिला और जो बच्चों, बेटियों पे जो हम बोलते हैं उनके लिए क्या, क्योंकि देखा गया था कि ये लोग ऐसे थे जिनको इनको अपना हक नहीं, ये लोग खेल या शारीरिक क्रिया में भाग ले नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए स्पेशल मेंशन बताया गया कि महिलाओं का भी उसमें लिखा गया, ये जो 12 आर्टिकल्स है। यस मैम। Okay, so other important events has been, I would say, landmarks, okay, hallmarks, to make it possible to increase the participation of women in sport. So in 1981, the first 2 female co-opted as IOC members. Just check, it's 1981. And in 1990, the first woman to be elected in the IOC executive board. Perhaps you don't know it,
who was the first woman to be elected to the IOC executive board, but just by chance, it was a Venezuelan, okay? In 1994, another woman group was created, that is WSI. And in 1994, it was celebrated, the World Conference on Women and Sport, from which a very famous declaration, the Brighton Declaration, came out, and there are many dignitaries that have signed, an organization that have signed this declaration. And it was created then in 1995, the International Working Group on Women, known as IWG, that also runs Congress every 4 years. अभी ये मैंने बताई थी, जो आप देखेंगे इधर 1981 में पहले दफा 2 महिलाओं को IOC में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में मेंबर होने का मौका मिला, पहले दफा। उसके बाद 1990 में पहले दफा देखा गया कि एक महिला को उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुनी गई है, उसको इलेक्ट किया गया। और 1994 में जो है, इसके बाद इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय जो है विमेन स्पोर्ट्स का एक अंतरराष्ट्रीय एक ये एसोसिएशन खोला, और ये था ग्रेट ब्रिटेन में। और 1994 में इन्होंने महिलाओं का खेल में पहला जो ब्रिटेन डिक्लेरेशन में इन्होंने सारे जो राज्य थी इन्होंने साइन किया। आप देखेंगे इसमें कई राज्य ऐसे जहां महिलाएं भाग नहीं ले पाती हैं। आप देखते हैं कि पहले जो बाधाएं थी, जो भी ब्लॉक्स थे, लेकिन वो सब काफी खुल के आ रहे हैं। लेकिन ये है क्योंकि ये सब काफी जो एसोसिएशन है, संस्था ने बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की वजह से इवन अभी आप देखेंगे ओलंपिक में जो महिलाएं भाग ले रही है वो ज्यादा है। और 1995 में इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ विमेन एंड स्पोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, और ये अपना कॉन्फ्रेंस है, जो कांग्रेस है, वो हर 4 साल में एक बार करती है। यस मैम। So these again are two events that, in my opinion, really push the movement of women's empowerment. And it was the Millennium Development Goals in the year 2000, in which the nations decided to participate in this one. But in 2015, after 15 years, and they were not fulfilled, then it was created, they was continued by the Sustainable Development Goals that you can see here at the bottom. Sustainable Development Goals that became to be known as the Agenda 2030, okay? So there has been celebration of the United Nations Congress on Women. Remember, the first one was in 1995. And then there has been one every five years. Last year was the celebration, a big celebration, but because of COVID-19, it couldn't be celebrated, in face-to-face, on-site, but it was online, and many activities were celebrated. And this month, particular, many will be celebrated based on the follow-up of the Beijing Congress in 1995. हम कहते 2000 में जो है जो हम बोलते हैं स्त्रियों का, महिलाओं का सशक्तिकरण, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का था 2000 में, उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन देखा कि उसकी पूर्ति पूरी तरह हो नहीं पाई। और लिंग समानता में हम देखते हैं जेंडर इक्वालिटी, जहाँ लिंग समानता अगला 15 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से हटा के इन्होंने डेवलपमेंट गोल्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करके आए, जिसमें महिलाओं और जो बेटियां हैं उनके लिए उन्हें अलग बना रखा था। ये आप देख रहे हैं हर 5 साल में होता है। 2000, 2005, 2010, 15 और 2020 में होना था बीजिंग में, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो आप देखेंगे ये लोग बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारी कार्यक्रम चलती रहती है। किस तरह से हम ज्यादा बढ़ावा दें, किस तरह से प्रोत्साहन करें, और समानता, लिंग समानता किस तरह से लेके आए। यस मैम। Okay, so other important elements in 1996 is when the promotion of female sport is added to the Olympic Charter. And with that also became to be celebrated the first IOC World Women Conference on Women and Sport, and it still is celebrated, okay? In minutes 4, and minutes, for those who are not familiar, is the meeting of ministers and government representative in physical education and sport, in which the agenda
is established of the tendencies that have to be followed. Okay, in MINEPS 4, it was suggested to create an observatory for women and sport, but unfortunately it was not fulfilled. In 2014, the UN and IOC signed an MOU in order to promote girls and women's empowerment. And of course, this is pushed by the SDGs, okay, and the Millennium Development Goals first and then SDG. And in 2015, UNESCO brought out quality physical education policies. And this is very important because in there, it is established that one of the elements is gender equality. अभी आप देखेंगे मैम ने कई चीजें बताया 1996 में प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट जो फीमेल महिलाओं का जो खेल है वो ओलंपिक चार्टर में जुड़ा गया और 1996 में जो पहला आईओसी का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था वो वुमेन इन स्पोर्ट पे वुमेन एंड स्पोर्ट के तौर पे किया गया। आप लोग सबकी जानकारी मिनिप्स क्या है आपको मालूम कर चाहिए। MINEPS जो मिनिप्स है जो मिनिस्ट्रियल एंड सीनियर ऑफिशियल्स जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट का जो हमारे राज्य में काफी लोग इसके बारे में जानकारी नहीं है और सारे राज्य के जो मिनिस्टर्स या सीनियर ऑफिशियल जो फिजिकल एजुकेशन में लगे होते हैं वो आके पूरे दुनिया के एक साथ आके चर्चा करते हैं जिससे कि वो देखते हैं कि महिलाओं के लिए खेल में शारीरिक शिक्षा में क्या क्या बदलाव लाना चाहिए। और इन लोगों ने सोचा कि महिलाएं खेल और शारीरिक शिक्षा में एक ऑब्जर्वेटरी यूनेस्को के द्वारा मिलके एक बनाए, लेकिन वो और 2000 उसका पूर्ति नहीं हो पाया। 2014 में यूनाइटेड नेशन आईओसी ने मिलकर एक MOU किया जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियां और महिलाओं की सशक्तिकरण खेल के द्वारा हो, उस तरह से उन्होंने अपनी एक शुरुआत की। और 2015 में आपने देखा कि इंटरनेशनल चार्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एक्टिविटी, और इसमें स्पेशली इन्होंने बार बार वहां लिखा है महिला और लड़कियां, ये लिखा है इन्होंने क्योंकि देखा गया है ये ऐसे विभाग है जहां इनको जो है समानता मिल नहीं पाता है। और आप सब देखेंगे अभी यूनेस्को में के द्वारा ये क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन आप लोग सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन के क्या है। अब ये हम देखते हैं जो पूरी जो दुनिया भर चर्चा हो रही है कि किस तरह से क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन, इसके क्या क्या नियम है, पॉलिसीज है, उसके बारे में 2015 में इसकी शुरुआत हुई। यस मैम। Okay, so just few elements to the quality physical education. I mean, this is a long story, okay? But just to make it short, because today we have no time for that, but these are the main aspects that are indicated what makes quality physical education. And you can check there gender issues, okay? Plus other elements are important, but this is indeed mentioned, and for us, it's very important. मैम ने बताया कि इसमें जो क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन में काफी पॉइंट्स दे रखे हैं वो उसमें हिंदी में दे रखा है नीचे, लेकिन इसमें सबसे पहले है कि जो लिंक के मुद्दे हैं वो उसके लिए ज्यादा महत्व उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, वो जरूर उसमें शामिल किया गया है, जहां बोलते हैं कि जब वो होगा तभी और भी कई पॉइंट्स के अलावा तभी हम लोग क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन जो फिजिकल एजुकेशन को कर सकते हैं। इस तरह से एक नियम इन्होंने 2015 में बनाया था इसमें। Okay, so there we get to get an action plan in MINEPS 6, and this was in 2017. And one of its 5 actions is to create, to conduct a feasibility study to create the Observatory for Women, Sport, Physical Activity, and Physical Education. So this is indeed very important movement in 2017. Remember what I mentioned, that in 2004, but it was not achieved. Then in here, it was taken back. And the year before COVID, 2019, Switzerland has indicated that they will host the secretariat and the place for this women observatory. And from there, there has been, they are in progress studying how to make it, because of course, there has been long studies, research being conducted with the women's group all over the world. And there are other elements important to mention that have come out, such as the 2018 IOC Gender Equality Review Project, the 2020 UN Women's Sport for Generation Equality Framework, and it is very important for organizations that are not familiar with that. And of course, the publication in 2020 UN Women COVID-19
women, girls, and sport build back better. मैम बताई थी कि जो 2017 में जो मिनिप्स की थे इसमें खजाना एक्शन प्लान था, इसमें से एक था, इसमें था कि कैसे एक ऑब्जर्वेटरी बनाना है जो महिलाओं के लिए खेल में शारीरिक शिक्षा और शारीरिक क्रिया के लिए, और इसमें कई राज्य आगे आए हैं कि वो तैयार होने के लिए। लेकिन 2018 में आईओसी ने लिंग समानता का एक प्रोजेक्ट किया है, और आप देखेंगे बहुत सारी अनुसंधान जो चल रही है वो सारे पब्लिक ऑलरेडी आपको गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने इस पे काफी काम किया है, और विमेन स्पोर्ट्स फॉर जनरेशन इक्वालिटी 220 में। और दूसरा है कि महिलाएं, हम बोलते हैं लड़कियां और खेल, किस तरह से हम कोविड में जो भी नुकसान हुआ है किस तरह से हम वापस उसका पुनर्निर्माण कर पाए, उसके बारे में भी काफी अनुसंधान और आपको जो लेख मिल सकते हैं। यस मैम। So, gender equity, what do we mean by that? It's allocating resources, programs, and decision-making fairly to both males and female without any discrimination, okay, based on their sex or addressing imbalance. So it does not mean treating men and women the same. It means justice and fairness for all girls and women, okay? And I do believe that we would like all our sister friends, women friends, husband, wife, sorry, partners, all to be treated equally and with fairness. That's particularly what it means. And in all means, in all the media, in all the awards that are created. Yes, please, translation. Yes, please. जो लिंग समानता है पुरुषों महिलाओं दोनों में, अब ये जो लिंग समानता वो अलग होती है, हम इक्वालिटी नहीं बोल रहे, हम इक्विटी बोल रहे हैं। तो इसमें है कि जो भी हमारे पास किस आधार पे आप निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने के लिए संसाधन कार्यक्रम या जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें आपको संतुलित होकर संबोधित करना है। लेकिन इसमें क्या जाता है, हम ये नहीं बोल रहे पुरुषों महिलाओं में एक समान, हम एक समानता की बात नहीं कर रहे हैं। जहां जरूरी है, जहां उनके जरूरत के मुताबिक, उसके मुताबिक उन पे जो भी चाहिए उस तरह से, तभी हम उसको लिंग समानता बोल सकते हैं। तो महिलाओं को निष्पक्षता के लिए अलग तरह से व्यवहार करना हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कम देना है। पुरुष और महिलाओं को हम ये नहीं बोल रहे कम, लेकिन जो उनको चाहिए, जो उनका ड्यू है उसके मुताबिक देना, उसको बोलते हैं इक्विटी। तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, जेंडर की इक्वालिटी अलग है और लिंग समानता जो हम इक्विटी बोलते हैं, ये दोनों अलग है। यस मैम। So when I get to this point, I always indicate to treat others as we would like to be treated. मैम ने ये भी बोला कि जब हम दूसरों के हम दूसरों को पेश आते हैं, हमें उस तरह से पेश आना चाहिए जैसे लोग हमें कैसे पेश आते हैं, तो तभी वो सही होगा। हमें दूसरों को भी अपने नजर से जब देखेंगे तभी हम सही तरह से उनसे व्यवहार कर पाएंगे। यस मैम। Okay, so 2021 data, and we have women's head of states and or governments, 22 countries, and only 24.9% of national parliamentarians are women. So you can see in the figure in your right that 7.2% are head of states, 6.2% head of government, women's minister 21.3%, and this is in the world, okay? UN Women calculations as it is indicated there. At 24.7%, it's women's health minister. In this COVID-19 battle, it has been evident that in the health sectors, workers, scientists, doctors, and caregivers, I mean, are women, but they are paid 11% less globally than their male counterparts. And this speaks louder, okay? Because this is a global situation and this is a global picture. In countries such as Canada, Ethiopia, India, and Madagascar, women's medical and health experts are increasingly found in leadership positions and taking the lead in daily press briefing and public service announcement. And this is important, but again, the representation worldwide, still women's are not so visible and still there are lots of prejudices.
मैम ने डेटा दिया है कि जो हेड ऑफ द जैसे एक एक स्टेट का होता है, नहीं तो जो गवर्नमेंट स्तर पे है 22 राज्यों का दिया था। इसमें सिर्फ बताया कि जो हम लोग पार्लियामेंट्री लेवल में सिर्फ 25% भी महिलाएं नहीं है। तो अगर आप इधर देखेंगे हेड ऑफ द स्टेट में 7.2% है, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर में जो आए हैं महिलाओं का है 6.2। लेकिन जो विमेन मिनिस्टर्स थे उनमें देखा है क्या 21% विमेन मिनिस्टर हो चुके हैं, लेकिन जो आरोग्य सेहत या हेल्थ मिनिस्टर्स देखे वो थे 24.7। और हम देखेंगे यहाँ एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हम देख रहे हैं काफी जगह महिलाएं काफी अच्छा काम कर रही है। मैं भारत का सिर्फ नहीं बता रही हूँ, लेकिन काफी राज्य में महिला इतना काम करने के बाद भी इन्होंने देखा कि जब इनका वेतन होता है तो ये एक है कि महिला और जो पुरुष वर्ग में दोनों में अलग, महिलाओं को 11% उनसे कम मिला है। ये मैं भारत का सिर्फ नहीं बताई, इन्होंने कई जगह अनुसंधान करके दूसरे राज्यों के बारे में बोला है। अभी इस तरह से ये देखा है कि ये इसमें इनकी जो आवाज ऊपर आनी चाहिए। अगर दोनों एक ही तरह के काम कर रहे हैं तो इसमें ये क्यों डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि स्त्रियां महिलाओं को कम वेतन मिले पुरुषों के मुताबिक। यस मैम प्लीज। Okay, so let's see what happens with women worldwide. And the truth is that everywhere they all face different situations, difficult situations to be in, particularly in sports still is a very male dominated environment. अभी आप खेल देखेंगे काफी जगह महिलाओं को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए खेल इतना ईजी है, वो आते हैं ऊपर तो भी वो बहुत ज्यादा मेहनत और मुश्किलों का सामने करके वो खेल में उभर पाते हैं। यस मैम। So the reference down there are just examples, and you can look at them if you want to explore much more. But in general, they all coincide that there are fewer women than men in management position. If a group falls below 20%, it is going to be subject of stereotype, the women's in those places. Harmful stereotypes and continues to limit opportunity for other women to communicate genuine personal difference. By underreporting women's sport, printed media contributes to general public's insufficient knowledge based on women's accomplishment in sport, and there's low number of women judges and coaches. मैंने बताया ये भी अनुसंधान के द्वारा ये रिसर्च करके देखा गया कि बहुत महिलाएं पुरुषों के मुताबिक बहुत कम है जो पोजीशन जो ऊपर वाले स्तर में पोजीशन में है, और ये ज्यादा से ज्यादा आपको 20% मिलेंगे जो महिलाएं ऊपर है, जो मैनेजरल पोजीशंस या ऊपर हेड वाले पोजीशंस होते हैं। दूसरा ये भी देखा गया कि इनको मौका नहीं मिलता है वो जहां अपना आवाज वो बता पाए। लेकिन कई जगह ये देखा गया कि जो भी है वो सही, जो भी मुश्किल है वो सही तरह से बाहर मीडिया वाले या कोई लोग बाहर लाते नहीं है। हमें नहीं पता जो सच्चाई क्या है, सच्चाई के मुताबिक कुछ और होता है जो आगे आते हैं। तो इसमें कई बार होता है कि ये क्यों है कि महिलाएं कम आ रही हैं, और आप देखेंगे कोचेस में भी देखेंगे महिलाएं कम है, जजेस में भी महिलाएं कम है। यस मैम। Okay, so normally it is said that when we are minority, then is where more mistreatment comes. And it is believed that that has been the case with women, which it is not true in many places. Now, be careful, because what does minority mean, okay? So I could be a minority here at this moment because I don't speak Hindi, for example, so I don't understand the language. Or in a physical education class, a girl could be a minority because she doesn't like, for example, soccer or football. So then she's not playing, or she's not allowed to play if the teacher would just want to focus on that sport. So we have to be very careful on how we deal with when it is about minorities, because there is where much more mistreatment comes from. या मैम ये बता दी कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कौन है, किसको हम किस तरह से हम इसका उदाहरण दे पाएंगे। तो उदाहरण के लिए जहां हम स्थित है उसके आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा मान सकते हैं। मैंने अपना एग्जाम्पल दे रही थी, जैसे अभी इतने सारे अभी आप करीब 7,000 से ऊपर पी टीचर्स हैं, काफी लोग हिंदी जानते हैं, मैडम हिंदी नहीं जानती हैं, ये तो कम लोग हिंदी जानते, तो वो लोग अल्पसंख्यक होंगे क्या?
तो इसके मुताबिक हमें ये मालूम करना चाहिए कि अल्पसंख्यक क्या है, क्योंकि और इसमें है कि अगर आप शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हैं और कई बच्चे भाग ले रहे हैं, उसमें से कई बच्चे खेल में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो अल्पसंख्यक होंगे? आप उनको हटा के वो भाग नहीं ले सकते? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम शारीरिक शिक्षा में अल्पसंख्यक क्या है इसके बारे में सही जानकारी लें। इसमें Okay, so discrimination in sport we have observed for different reasons, okay? We have observed discrimination by religious belief. So examples are when some of Muslim women were rejected to participate in sport because they covered their head. Because of technological advantages, I mean, not all the countries are at the same level. Because of the color of the skin, there has also been discrimination. Because of the country of origin, some have been rejected, for example, visas to go into one country to another. From profession, sometimes physical education teachers are looked down because it is believed that the chemistry or mathematics are more important than a physical education teacher. For political reasons, because you come from a country that perhaps it's against another, I would say, mainstream political views. Hyperandrogenism has been the latest one, and there's mistreatment of athletes who have received due to their biological condition. So there are many examples in sport about discrimination. अब खेल के विभाग में जो भेदभाव है इसमें काफी जगह देखा है। एक तो हम देखते हैं कि धार्मिक तौर पे, अगर धार्मिक विश्वास के तौर पे हम भेदभाव दिखा रहे हैं, या तकनीकी तौर पे कई लोगों के पास अच्छी तकनीकी सारी इक्विपमेंट्स है, दूसरे के पास है, उस तरह से भेदभाव होता है। हमारी जो त्वचा है उसका जो रंग है उसके मुताबिक भेदभाव होते हैं। जिस राज्य से उनका जन्म हुआ है उससे भी हो सकता है। और हम जब बोलते हैं जो प्रोफेशन है, माने अब कई लोग लगता है कि शारीरिक शिक्षा का जो प्रोफेशन है वो सही नहीं है, उसको दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स उनपे सही तो रेस्पेक्ट नहीं देते, ट्रीट नहीं देते, उनको लगता है कि सब्जेक्ट का ही ज्यादा अच्छा है, दूसरे लोग थोड़े नीचे स्तर पे है, या राजनीतिक तौर पे भी भेदभाव हो सकता है। लेकिन आपको, मुझे पता नहीं, दूती चंद का केस क्या आप लोग डाल सकते हैं चैट बॉक्स में? दूती चंद को क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ थी? हमें जो भी है काफी हमें पढ़ना चाहिए, हमें क्या दुनिया में और उसके बारे में अपडेट होना चाहिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। आपको मालूम है ये हाइपर एंड्रोजनिज्म माने जो मेल हार्मोन है उसका ज्यादा है दूती चंद में था, जिसके वजह से उसको बोला गया तुम महिला के वर्ग में नहीं भाग ले सकते। तो इन्होंने इसके लिए ये कोर्ट में जाके इन्होंने जो सीएस में आके वो जीत गई। लेकिन इसके बेसिस पे ही जो कैस्टर सेमेन्या का केस भी अलग हुआ, तो जिसमें भी उनको देखा है कि उनके शरीर में जो हार्मोन है, जो हम बोलते हैं मेल हार्मोन का जब लेवल ज्यादा होता है, तो उनसे बोला जाता है कि नहीं, आप स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ भाग नहीं ले पाते। ये बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे उनपे संघर्ष होता है, वो मानसिक तनाव पड़ती है। लेकिन बाद में दूती चंद ने भाग लेना शुरू कर दिया, वो जीत गई। अभी कैस्टर सेमेन्या भी इनके एग्जाम्पल देख के वो देख रही है वो आगे क्या कर रहा है। यस मैम। So if we check the record of the Olympic movement, of course, then we will understand why in sport still the changes compared to other sectors in social life has been slow, because the Olympic movement has been taken as the example. So in the first Olympic Games, no women participated. And this is how little by little they increased in the Olympic Games. And in 2016, 45%. But in Paralympic Games, 35.4%. In Winter Olympic Games, 43.3%. And Winter Paralympic Games, 23.6%. I mean, this is the reality. And let me tell you, this is just speaking about athletes' participation. We are not speaking about the whole sport ecosystem, because it is even less. If you consider the quotation information now down at the bottom, that in female representation, among 90% or 90 members, of the Olympic International, of the IOC, of which 22 are women, which represents only 24.4%. And that also has an impact going down. So we have 5.7%
international federations have presidents who are women, and 12.2% of vice presidents women, 13.1% in the executive committee. So there you see, I mean, how still this leadership position in sport still have to continue struggling. ये देख रहे हैं कि यहाँ जो हम लीडरशिप जो हम बोलते हैं कि लीडरशिप देखते हैं अब जब 1896 में पहला जो ओलंपिक आप जानते हैं कि जब महिलाएं भाग लेना तो दूर की बात थी, वो वहां पास में कहीं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। लेकिन आप देखेंगे 1936 में 9% महिलाओं ने भाग लिया, और कितना सालों बाद 1964 में जाके हम देख रहे हैं 13%, और 2016 में आप देखेंगे वो था कि 50% के भी नीचे, लेकिन काफी बदलाव आ चुका है। लेकिन अगर आप 2016 पैरालंपिक का गेम देखेंगे, जहाँ लोगों को पैरालंपिक होती है, जहाँ लोगों को विकलांग जैसे हम बोलते हैं उन लोगों के लिए जो खेल होती है, उसमें भी देखा है कि उसमें 35%, और 2018 विंटर ओलंपिक्स में देखा गया वो भी 50 के नीचे ही था, और विंटर पैरालंपिक में भी बहुत कम, हम बोलते हैं 23.6। लेकिन ये हम भारत में भी अगर देखा जाए, हर कमिटीज में, फेडरेशन में कितनी महिलाएं हैं जो उसमें है, हम देखते हैं परसेंटेज अभी भी कम है, क्योंकि जो महिलाओं का जो IOC में, इन्होंने भी बताया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो 90 मेंबर है, इसमें सिर्फ 22 है जो स्त्रियां हैं, उसमें से 5%, 6% भी नहीं है जो प्रेसिडेंट है, जो भी फेडरेशन के, और 12% जो वाइस प्रेसिडेंट के हैं, और सिर्फ 13% होते हैं जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स होते हैं। अगर आप भारत का भी लेंगे, जो अलग अलग फेडरेशन में कितनी महिलाएं हैं, ये बहुत जरूरी है बदलाव लाना, जिससे कि अगर वो इसी उच्च स्तर वाले पोजीशन में जब तक नहीं आएंगे, तब तक बदलाव लाना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। यस मैम। Okay, so in brief, in almost all countries and cultures, girls and women participate less in physical activity than boys. Despite many actions taken and policies in play, still there is a difference because there's a lack of women's participation in leadership positions. Of course, take into account that the biggest changes our policy have been taken in the last part of the 20th century. So there has been years and years of mistreatment, and that is not easy to be changed. There is a lack of female leadership as the most important barrier, and this is identified for women, having more women in sport, okay? And women are more vulnerable than males to gender-based violence in sport. इसमें जो मैडम लास्ट में बताती है, मैडम जो इन जनरल जो सामान्य तौर पे मैडम बता रही थी कि लगभग सभी देशों में, संस्कृतियों में लड़कियों महिलाएं लड़कों और पुरुषों की तुलना में कम शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, और जो कार्रवाई के बावजूद भी विभिन्न प्रकार की नेतृत्व स्थितियों में हमने देखा है कि महिलाएं बहुत कम ही स्पष्ट ऊपर आती है। तो ये नेतृत्व स्थितियों में जब तक महिलाएं नहीं आएंगी, तब तक हम औरों को आगे लाना, या महिलाओं की जो खेल में जो मुश्किलें हैं उसके बारे में जानकारी लेना भी, उनके बारे में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। तो महिलाओं खेल में सबसे महत्वपूर्ण अवरोध का कारण है महिला नेतृत्व का अभाव है। तो इस इंगित करता है कि निर्णयकर्ता, प्रशिक्षक और रेफरी के रूप में महिलाओं की संख्या को वृद्धि करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें आना चाहिए, और खेल में लिंग आधारित हिंसा के लिए महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक असुरक्षित रहती है, क्योंकि इसमें जब भी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो भी समस्या आती है वो ज्यादातर महिलाओं ही पर आती है। यस मैम, ये सारे अनुसंधान के तौर पे ये जो भी लिखा है उसके तौर पे लिखा है। यस मैम। Okay, so just for your information and for you to know, you are welcome to review this. So this is data of the Gender Equality Report on Women's Rights in Review 25 years after Beijing. This is a publication that you can just check, and in which it is evidence the gaps that still exist in some sectors in society, and particularly in all regions of the world, okay? And there is the Sport for Generation Equality framework. That's all organizations can sign that, or as individual you can sign. So it is an initiative to empower the advancement of gender equality in and through sport.
मैंने बताया कि इसमें काफी डेटा है। अगर आप गूगल सर्च करके यूनाइटेड नेशंस का 2020 की जो देखेंगे, जो लिंग समानता पे जो रिपोर्ट है, वो होती है कि जो महिलाएं के अधिकार पे उन्होंने काफी ये किताबें हैं जहाँ पूरा आपको अनुसंधान के तौर पे लिखा हुआ है। लेकिन ये सब लिखने के बावजूद भी अभी देख रहे हैं बहुत सारी कमियां पाई गई है, लेकिन फिर भी कई जगह कई राज्य में जो हो रहा है उसके बारे में वो लोग निकाल पाए। दूसरा था कि किस तरह से खेल है जो समानता लाने में मदद कर सकती है। वो बीजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे था, जहां हम बोल सकते कि सशक्तिकरण किस तरह से खेल के द्वारा हो सकता है महिलाओं और बच्चों में। इसके बारे में भी 2 लेख हैं जो आप देखना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, हम लोग बहुत हम बहुत लकी है कि हमें मैडम जैसे रोजा जैसे मैडम मिले, कि आप कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग यूनाइटेड नेशंस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मिले हैं। हम जो बोलते हैं हमें सिर्फ अपने, लेकिन इसके बारे में अगर जानकारी है, आपको अगर कुछ जानकारी लेनी है, आप किसी चीज में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो जरूर ऐसे किताबों लेख के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। यस मैम। Okay, and of course, this very important one, which is on women's and sport from as a result of all these thoughts and facts that have happened in the year 2020 and the impact of COVID-2019 in many organizations, and particularly the women's organization, there is concern towards the advancement that the women movement have achieved in sport before COVID 2019. And as we know, there has been a big impact in the economic sector. So there is this alarm in order not to, when we build back, not to do cuts to the projects that have already been established towards finding the desired equality in women and sport. मैम बताती है जो कोविड का किस तरह से असर पड़ा है महिलाओं का और खेल पे स्पेशली। तो इसमें देखा गया कि इसमें यहाँ देखा है कोविड के वक्त पे हमने देखा है जो वायलेंस है, या जो हम देख रहे हैं कि कोविड में काफी बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे कि पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, क्योंकि लोग घर में होते हैं तो इसकी चांसेस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी इन्होंने पहले किस लेवल तक पहुंच गए, अभी कोविड की वजह से दोबारा पीछे हट गए, तो जो भी इन्होंने शुरुआत की उसका कहां तक होगा। लेकिन पुनर्निर्माण के लिए इन्होंने कई चीजें नेतृत्व में, और लिंग समानता, और ये जो वायलेंस हुआ है, आर्थिक जो स्थिति कैसे बढ़ाई जाती है मीडिया के तौर पे, और महिलाओं का जो भाग लेना, ये सारी पॉइंट्स उसमें आ चुकी है। क्योंकि कोविड ने काफी हद तक खेल में काफी बाधा डाली, लेकिन किस तरह से उसका पुनर्निर्माण हो सकता है, जिससे कि जहां पहले हमने ये लोग काम शुरू करके एक जगह तक पहुंचे, वहां से हमें आगे बढ़ना है, ये नहीं कि पीछे। यस मैम। Okay, so this year's theme is choose to challenge. Okay, so there are several very nice videos related to that. The good examples from UN Women, and also there are initiatives in several regions. For example, this one, it's from the Latin American group. There is a gender sector, and you can find in any of them nice example. Now, I would like Pranesh to choose the second video. So just for an example of one of the ones that you can find related with I choose to challenge. So I will stop sharing so he can show you the second video. I also would like the audience participants to write in the chat box. Hello. What do you choose to challenge related to women and sport? So I will ask my friends from the panel, Rosa and Ruth, if you just can take notes of what our participants decide, what do they choose to challenge, okay? While Pranesh has the second video ready, okay? Just a minute, please. 1 minute, please. Yes, so please, while he does that, check in the, write in the chat box, please, what do you choose to challenge, okay? Just a minute, why do you choose to challenge is what, Rosa, what do you want me to tell them? It's, they will write it on the chat box. What do they choose to challenge? Now, I want to show the second video.
सेकंड वीडियो अभी देखिए, आप सबको मैम ने ये बोला, मैंने सुबह भी आप लोगों से प्रश्न डाला था, आप ये चुनौती जो आज महिला दिवस पे जो हम बता रहे हैं, ये इसमें चुनौती आप क्या क्या चुनौती देना चाहते हैं? आपने अपने भविष्य में रेजोल्यूशन क्या लिया? आप प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स प्लीज, व्हाट यू चूज टू चैलेंज, प्लीज पुट ऑन ए चैट बॉक्स. Yes, good. Jessica बोली है, support girls. So play the video, yes, while they write and watch the video. Okay, Please. you can write and please watch the video. Happy International Women's Day. I choose to challenge pregnancy prejudice. I do this by choosing to work for a long-sighted organisation who values me not just for my talent and time, but for my whole self, my family and my personal aspirations for today and the future. I choose to challenge the statement that menopause is a taboo topic. Share excellent practice and make menopause an everyday conversation. I choose to challenge phrases like man up in everyday conversation. I'll do this by actively talking with those around me about the gender stereotypes that they reinforce. I choose to challenge the mindset that menopause impacts only women of a certain age. I will do this through inclusive conversations and communications about support for menopause in the workplace. I choose to challenge the underrepresentation of women in media. I will make a conscious effort to find and engage with content created by women and encourage others to do the same. I choose to challenge the inequalities for Black women within their health through the maternity system and otherwise. I will do this by continuing my work as a birth activist and reproductive justice warrior. I choose to challenge that half the population are affected by menopause. I will do that by making it clear that everyone can be affected by menopause, whether you're experiencing it yourself or through your relationships, a partner, family member, friend or work colleague. Everyone needs to know about menopause. I choose to challenge the taboo surrounding baby loss and miscarriage. I'll do this by sharing my own experiences and encouraging others to do so also. I choose to challenge period poverty. I will do this by purchasing my period products from a business that I know will help women in need. I choose to challenge being called arrogant about my career goals while my male colleagues climb the career ladder. I will do this by speaking up and always advocating for my career. I choose to challenge the assumption that menopause is a taboo subject. I challenge that in every way by speaking up, making more people aware and challenging the lack of conversation around this subject. Not just on International Women's Day, every day. Okay, so I will share again my slides, and it was great to see all what you decide to challenge. We're not going to talk about that, but I trust my panelists, my friends are writing there. I mean, what are those things that the people decided to challenge? So I choose to challenge that we should have physical education teachers in all schools, okay? In all nations, okay? So here we have, but when I did this check very, very late and few hours before this event, there were not many about sport. There were many about other sectors. So we need to move and be more active in that sense, okay? Who have put in the chat box. Have you asked Rosa or somebody to read it out for you? Yes. Sure. So I continue. So in order to do you want to read that? Rosa, do you want to read out this many are writing? Not now. Not now. At the end. At the end, because I asked, to take notes, because otherwise it will be too long. So we need to build back better. But in order to build back better, we need to know and address our inequalities, to speak about those things that we discriminate about body, gender, sexuality, age, ability, caste, race, tribe, location, religion. Okay, we need to speak back. And it, of course, it will depend on the region of the world, in the country, on the world in which we are. मैं बता दी हम किस तरह से पुनर्निर्माण कर सकते हैं, बेहतर निर्माण किस तरह हो सकता है। इन प्रश्नों को मजबूत करने के लिए हमें
जो शरीर का लिंग, लैंगिकता, उम्र, योग्यता, जाति, कुल, स्थान, वर्ग, धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले खेलों में असमानताओं को स्वीकार करना है और उन्हें संबोधित करना बहुत जरूरी है। यही आपने अभी देखा, बहुत जरूरी है कि हम अपना आवाज उठाएं और जहां भी हमें गलत दिख रहा है हम किस तरह से लिंग समानता लेके आए और सबको भेदभाव के बगैर किस तरह से खेल और शारीरिक गतिविधियों में बदलाव ला पाए जहां महिला और बेटियां भी भाग ले सकते हैं। Okay, so for this, we need to speak a little bit about social integration. And it is a two-way process, okay? It's reciprocity, it's give and take. As I said, we need to treat the others as we would like to be treated. It's mutual knowledge and respect. It's voluntary participation, it's and cooperation. Nobody can push. And you have to share access to and possession. The cartoon that it's in there, of course, is an irony, okay? And I will allow, I mean, the ones in English can read it, but in order not to make it longer, Usha, please translate what it says in the cartoon. Yeah, it's all men are born equal in the sight of God, nothing about women. यहाँ आप देख रहे हैं पुरुषों के वर्ग में देखा गया कि समानता है। हम जब बोलते हैं कि सब जो जब हम देखते हैं कि जो भगवान हमको देखते हैं वो पुरुष, मर्द या पुरुष के लिए बोला है कि सारे मर्द एक समान है, लेकिन महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं गया है। ये दिख रहा है आपको ये समानता दिख भी रहा है। पुरुष देखिए आप कितना है, लेकिन महिला को देखिए यही आपको भेदभाव दिख रहा है। और मैंने पहले बता रही थी कि हमें एक दोनों तरह से जो प्रोसेस होनी चाहिए, जिससे कि हम जिस तरह से देते हैं वो ही हमको मिलता है। इसलिए आपस में अच्छी तरह से जानकारी हो, ज्ञान हो, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और हमें खुद अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए, किसी का हमें बोल के नहीं करना चाहिए। तभी हम ये एक सामाजिक बदलाव या एक जो समाज में एक साथ मिलके काम करना है उस तरह से एक बदलाव आ सकता है। यस मैम। Okay, so again, social integration is based on institutionalized process, okay, that we have to be of social justice, okay. It is at personal level, but also at structural level. It is transferable from one social sphere to another, okay. So we have to make those advances in terms of equality in some sectors, transferable to other sectors, like for example, sport. So, but we know that it's not perfect. It is a permanent challenge, okay? This is part of this theory of social integration. अभी ये मैम बताती है कि सामाजिक अखंडता किस तरह से आ सकती है। वो होती है संस्थान के तौर पे हमें जो सामाजिक जो जस्टिस मिल सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे भी होना चाहिए। और इसमें हम देखते हैं कि एक समाज से हम कैसे दूसरी तरह से, एक खेल से दूसरी तरह हम कैसे उसको उस सीख को हम ला सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि ये स्थिर हो, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं हम जो भी सीख ले रहे हैं ये सामाजिक अखंडता में, हम जो एक जगह जो सीख लेते हैं उसको दूसरी जगह अगर हम उसको लागू करें वो काफी अच्छा रहता है। इसी को हम बोलते हैं सामाजिक अखंडता। Okay, so just to sum up, okay, there are many actions, documents, organization that has pushed for the promotion of women in physical activity, physical education and sport. The literature indicates that there is women do not participate as much as men in sport and physical education, and that women leadership in decision-making position in sport is still low. अभी संक्षिप्त में मैडम ये बता रही है कि ऐसे कई कार्य हैं जहाँ दस्तावेज संगठन है जिन्होंने महिलाओं की शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक शिक्षा, खेल में बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन साहित्य इंगित करता है कि अभी भी लड़कियां और महिलाएं समान रूप से स्वस्थ जीवन शैली एवं शारीरिक शिक्षा के लिए शारीरिक गतिविधि का अभ्यास नहीं कर पा रही हैं। बहुत कम लोग कर रहे हैं, आज आपने देखा भी है, लेकिन पहले से बेहतर है। खेल जगत में निर्णय लेने के लिए, ये निर्णय लेने की स्थिति में अभी भी महिलाओं को नेतृत्व बहुत कम है। तो हमें ये देखना है कि महिलाएं नेतृत्व को किस तरह बढ़ाया जाए। ये अगर शुरुआत हो गई तो इसमें ही बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यस मैम। Okay, so I have to speak about Yapeskave because you would say, I mean,
who this organization is. It exists since 1949, and it's the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women. And since then, it has conducted and worked to establish network in all places of the world in order to push for practitioners and also researchers to work together and to make a better place for girls and women in physical education and sport. And in the board, we always make emphasis that all regions of the world are represented, okay? अभी आप देखेंगे मैडम इपस्को जो बता रही थी, मैंने बताया इपस्को में अंतरराष्ट्रीय जो एसोसिएशन है जो शारीरिक शिक्षा और महिला और बच्चों का है, ये जो इंटरनेशनल बॉडी इसकी प्रेसिडेंट है मैडम। इनका जो है पूरे वर्ल्ड भर में हर राज्य में इनका रिप्रेजेंटेशन है। और मैडम की वजह से हमको जो है जो 60 अंतरराष्ट्रीय जो टॉप के हमें स्पीकर्स मिले वो मैडम की वजह से मिल पाए हैं। ये लोग अपना कांग्रेस चलाते हैं और आप देखेंगे 1949 से इसकी शुरुआत हुई है, तो इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किस तरह से महिला और स्त्रियों को खेल के विभाग में किस तरह से आगे ला पाते हैं। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल काफी दूसरे संस्थान से भी जुड़ी है, इसलिए ये लोग हम जो बोलते हैं हमारी जो आवाज है जो रीजनल स्तर पे जो आवाज है वो अगर इनके ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा जाए तभी सब मिलके पूरे राज्य मिलके हम ये लोग कुछ बदलाव ला पाते हैं। इसमें आप देखेंगे मैडम प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ रोसा डिकेट मिलर भी मैडम भी है, तो हमारे पास काफी जो मैडम की जो ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन है वही लोग हमारे साथ हमारे स्पीकर्स रह चुके हैं। यस मैम। Okay, so there are some publications that we have done in particularly where we observe there has been gaps in the literature, okay? So in the first part of this century, it was published Muslim Women and Sport because there was a gap in that area. Then in 2016, the first book ever written about women and sport in Latin America in English. So it's an initiative from Yapescave. You have this series that is called the Continental Series, each one from a continent. You can download it free from the Yapescave webpage, and it is based on women who have made a difference in physical education and sport. If you want to know more about the history of Yapescave, there are 2 books in the webpage that you can find since 1949 until 2019, when the 70 years of the organization were celebrated. And I am happy to say that in March, it will be launched, the first book of women and sport in Asia, okay? So this is another very important and remarkable contribution, as I indicated before, where there has been gaps in the literature about women and sport. देखेंगे अब मैडम पूरी बता रही हैं, आप जरूर इपैस्को की इसमें आप जरा लॉग इन कीजिए और यहाँ देखेंगे इनकी जो इन्होंने अनुसंधान करके ये जो किताबें लेख लिखी है, ये जो छोटी छोटी किताबें ये फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसमें अलग अलग राज्य पे शारीरिक शिक्षा और खेल के भाग में महिलाओं ने जिस तरह से दिया है उसके किताबें जो फ्री डाउनलोड है, लेकिन इनकी जो पहली किताब जो कि महिलाओं और खेल में लैटिन अमेरिका में, दूसरा मुस्लिम महिलाओं और खेल के बारे में भी किताब छपी है। और इनका संस्थान बहुत अच्छा कर रहा है किस तरह से महिलाओं की आवाज और महिलाओं के लिए क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में काफी जानकारी है। और मैडम बोल रही थी इनका अगला किताब जो छपके एशिया में वो भी अभी बहुत जल्दी निकलने वाला है। आप जरूर ये वेबसाइट देखिएगा, तो उसमें से आप अंदर जाएंगे तो इसकी हिस्ट्री, क्योंकि 70 साल हो गए जब से चला है, इन्होंने दुनिया भर में शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा अपना जो कंट्रीब्यूट किया है। यस मैम। Yapescave has hosted Congress, quadrennial Congress, and without any interruption. And in this year, it's the quadrennial Congress, which is a challenge because it will be virtual, and it's in Tianjin, China. So you are welcome to participate in our Congress, okay? It's always a great experience. And in this year, we are learning, okay? It's a new process to all of us. अभी मैम बताई थी इनका जो कांग्रेस होता है वो हर 2 साल में होता है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो 1949 से इनका कांग्रेस चल रहा है, अभी इनका कभी भी बीच में रुका नहीं है। लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से एक ब्रेक आया, तो अभी जो है ये इसी साल
इनका कांग्रेस चाइना में है, वर्चुअल भी हो सकता है, तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस पे भाग ले सकते हैं। आप में से जो, क्योंकि इसमें वर्चुअल भी है, जरूरी नहीं है चाइना जाना है, आप यहाँ भी इसका जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो जिनको लगता है कि हम भाग लेना है, तो जरूर भाग ले सकते हैं। Yes, ma'am. Okay, so some national women's organization, and I indicated some, okay, there are many, but in order also to make you think that you could start or create new ones. Let's say that the first two ones that are known are the Japanese Association of Physical Education for Women and the Korean Association of Physical Education and Sport for Girls and Women, both since 1954, inspired by Yapescave. Remember, Yapescave was created in 1949. So these two were inspired by Yapescave, okay? And they still exist and they are very, very active. And we have Women's Sport Foundation from USA that has lots of material in the web page. Okay, the Canadian Women and Sport, previously known as Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and Physical Activity cause. In Colombia since 1995, another association. In Australia since 2005. And the Turkish Association in 2014. And there are many others, okay? I just highlighted and mentioned some of them in order to push you to also think about a possibility to have your own organization to make it moved, okay? Oh, that's great. मैडम ये बता रही थी कि जो काफी राज्य जो है अपने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, जापानीज एसोसिएशन और जो कोरियन है, ये लोगों ने 1954 में बहुत पहले वो इनके जो इपास के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से शुरुआत की है। आप देखिए कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, टर्किश है, इन सब ने शुरुआत किया है। तो मैडम कहती है आप भारत में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे जहाँ महिलाओं का है और जो लड़कियों का जो भी इश्यूज है हम इसमें जरूर ले सकते हैं। तो मैम बोलती ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इससे सिर्फ कई बताए, इसका बहुत है लेकिन इन्होंने थोड़ा का ही यहाँ दिया है, क्योंकि अलग अलग राज्य में क्या हो रहा है, जब तक महिलाओं की और हमारी बेटियों की आवाज हम ऊपर ला नहीं पा रहे, उनकी क्या मुश्किलें जब ऊपर नहीं ला पा रहे और क्या अनुसंधान क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी न हो, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। यस मैम। Okay, so then some final remarks. It is necessary to increase women's participation in different roles, okay, such as physical education teachers, coaches, judges, referees, researchers, journalists in leadership position, okay? And particularly, I said normally researchers also in some faculties and universities sometimes are minorities, and particularly because there is this stereotype of what are we doing research in physical education and sport. More efforts are needed to incorporate girls and boys to school and to the physical education class. And remember, because even though nowadays there are many kids who don't receive a physical education class at school, okay? Policies in place about gender equality need to be enforced, as well as it has advanced in the political agenda at parliamentarian level, which is not enough, and we are not satisfied, but it should also happen in all sectors of society, and sport must be one of those. मैम इसमें जो अंतिम टिप्पणियां में बताई कि जो पी अध्यापक हैं, वो प्रशिक्षक, न्यायाधीश, रेफरी हो, कोचेस हो, पत्रकार हो, इन सब में नेतृत्व को के पदों की जैसे विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। जब तक महिलाएं उस स्तर पे नहीं पहुंच पाती है, हम देखते हैं कि नीचे स्तर पे बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन ऊपर जो जहां निर्णय लेना है वहां महिलाएं कम है। जब तक वहां पर बढ़ावा नहीं दे, जहां महिलाएं ज्यादा उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे, तब तक हम आगे ज्यादा हम इसके बारे में हम ज्यादा सोच नहीं सकते। लड़कियों और लड़कों को एक तो हम बोलते हैं स्कूल में जाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में शारीरिक शिक्षा का भी उनको शारीरिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। कई जगह ऐसा है संस्थान स्कूल है जहाँ उनको बच्चों को शारीरिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि मानव के समग्र विकास के लिए हम जो बोलते हैं जो शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, तभी हम जो है पूरी तरह से जो है मानव का जो विकास तभी हो सकता है जब शारीरिक शिक्षा हो। लिंग समानता के बारे में नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। संसद में भी देखा गया है, राजनीति एजेंडा में हमने देखा है कि सब जगह ये लोग बोलते हैं कि लिंग समानता होना चाहिए। तो समाज में लिंग समानता की क्या है?
और खेल विभाग में लिंग समानता के बारे में हम क्यों सोच नहीं पा रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी है हम आवाज उठाएं। भारत में भी इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि काफी फेडरेशन या काफी जगह ऐसे हैं जहाँ ऊपर जो नेतृत्व स्थान पे हम देखते हैं लिंग समानता नहीं है। हो सकता है कि हम वेतन के तौर पे देखा जाए, या हम देखेंगे पोजीशन के तौर पे देखा जाए, या रेफरीज जहाँ भी देखें हम देखते हैं लिंग समानता कम है। तो इसमें हमें एक बदलाव लाना जरूरी है। यस मैम। And you may ask me, why do I insist on physical education class? Because perhaps this is the only place in which boys and girls can first have access and be familiar with sport. And just by examples there, and then boys and girls work together in a physical education class, and they can see that each one of them can lead, then it's where the difference can come for the future. अभी मैम बोलती कि मैम शारीरिक शिक्षा पे हम जो बोलते हैं लड़कियों और लड़कों को साथ में क्यों आना है, क्योंकि ये जब साथ आके जब खेलते हैं एक दूसरे को समझ पाते हैं, ये आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को किस तरह रेस्पेक्ट करना है, किस तरह खेल में भाग लेना है, उसके बारे में समझ पा रहे हैं। इसलिए सिर्फ ये शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो संभव है, काफी जगह हम देखते हैं कि बच्चे बाहर नहीं आ पाते, लेकिन इस शारीरिक शिक्षा के द्वारा इनको बहुत महत्वपूर्ण सीख मिल पाती है, जो आगे जाके उनको बहुत फायदा हो सकता है। यस मैम। Okay, so quality physical education, it's essential, okay? It's to just have life skill, okay? But it also promotes inclusion, teamwork, cooperation, discipline, peace, and work. And the last part is that we cannot be satisfied with the advancement of women in sport just in leadership positions. We need equality in all women's participation in all roles. For coaches, for judges, for physical education, for journalists, for researchers. This is what I believe in, because otherwise it will take too long. It will take too long for make the changes happen. मैम बता दें कि ये जो जीवन कौशल, जो जीवन के हमें तो बोलती जो जीवन की कौशल सीखना सभी को शामिल करने में बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं अनुशासन, खेल के द्वारा अनुशासन, टीम वर्क और काफी कुछ हम सीख ले पाते हैं, लेकिन वो तभी हो सकती है वो क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन द्वारा ही संभव है। लेकिन इसमें नेतृत्व अगर सिर्फ कुछ लोगों में नेतृत्व मिला महिलाओं में, और उसमें वो सही नहीं। हमें ये चाहिए कि जो खेल का जो नेतृत्व है ये हर महिलाओं को उसका भाग मिले। मे भी हम बोलते हैं जैसे कोच हो या न्यायाधीश हो या प्रशासक हो या पत्रकार हो या खिलाड़ी हो, सबको ये समानता मिलनी चाहिए और कोई भेदभाव का फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन नेतृत्व जरूर सब में अगर आ जाए तभी एक बदलाव आ सकता है। अगर बदलाव लाना है तभी हो सकता है, लेकिन ऊंचे जगह पे जो बैठे हैं वो कई बार जो नीचे स्तर पे उनके बारे में सोच नहीं पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें बदलाव लाने पे हर लेवल पे, हर जो स्तर पर हमें ये इन लोगों में नेतृत्व लाना, महिलाओं में और हमारी लड़कियों में एक नेतृत्व की जो रिस्पांसिबिलिटी लाना भी जरूरी है। यस मैम। Okay, so just the last part, I want to say thank you very much for your patience, for being here. And I would like the last video to pay tribute to the women in India, particularly with these famous women women in sport, which have made a difference, okay? And I think they have inspired many others. There is still a long way to go, but let's appreciate this their experience, okay? And indeed, it has been a pleasure, okay? ये लोटा बेलन चलाने वाली भारतीय नारियां हैं। अब कहाँ ये निक्कर उक्कर पहन के दौड़ते फिरेंगे? में विमेंस टीमें काम के लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए बनाई जाती है।
Well, thank you very much for your, again, patience. It has been a long Rosa, presentation. you had one video of yours where there's a song and then she plays the women video. Yeah, well, there is another video followed by this one, but that is also about India. Not about the Indian, the other one which you showed me once, a girl plays basketball. Or you don't have the video to share. Yes, well, let's say we can start asking and questions, and I check for the video. Okay. Can you ask them to read out the challenges that they choose? Yes, I wonder whether my colleagues Rosa and Ruth were able to take notes about the challenge. I mean, our group decided to go for. Yeah, Ruth, how about you? Yeah, thank you, Professor Rose and Dr. Rush's brilliant presentation there. So you thought-provoking ideas came from the presentation, Rosa, so well done. There was a lot of chat going on about what people wanted to challenge for the future. A lot of it related to challenging injustice and inequality, and challenging the role that females have and the role that they have in sport. A lot of it challenged round about gender and gender stereotyping and trying to dismiss those prejudices. There was a lot of discussion or chat about discrimination and how they can be role models and inspire people of the future, females of the future. So it created a good question and good debate, and it made me think about what my role was, and it certainly made the females in the audience and all the PE teachers out there, it made them think about what they could challenge in the future. So it had some good questions come through that, Rosa and Dr. Usher. I just like to add that one I liked most was that one student said she wants to become the best teacher, and I'm quite sure with this presentation and with your program, Usha, this will be quite possible to be reality in quite a soon time. That's great. Thank you. Thank you. Thanks a lot. I think there are a few questions. I think it's been, you look at the chat box, there's lots, the response has been very encouraging. So you see now women are very smart. All of my PE teachers are excellent. They're doing so good. Because morning I put up the question, they all are getting in. Some have a problem with language, but I think it's really great. I don't know whether there were a few questions. I think there were one or two questions which were there. Dr. Usha, the video, it's in the chat box, the link. So maybe Pranesh can start. Sure, that's because I found the videos where you could share that. Yeah. Yes, and I think thank you, Ruth and Rosa. Thank you very much for having summarized. And I think we can put that together. And this, as I said, this can be today. I mean, what this group challenged to, okay? So we can put together all these ideas, and that could be the contribution. Because I'll send you the entire chat box, what was there. We'll forward that to you too. Exactly. So that's something great. But today being on the International Women's Day, and I think they all are putting this across. That's great. And just share these all these ideas about challenge to your minister, to your authorities. That's important. What the women in the group believe. Well, men and women. I imagine that in here there are men as well. No, it's only women. It's only women. Yes, this is totally a PE women teachers. I told you, we only have women teachers. It's a new batch, and we are so lucky. It's only my girls, I say all women teachers, highly motivated. So it's perfect. It's perfect for the challenge. Okay. So just write that and all those ideas that they brought out. So this is the challenge of the Women's Day of these people, this group from India. I think this is fantastic, and share with your authorities. Yeah. That's great. So we could share we could just share the video. There's just one video because I felt the video was so nice. I felt like girls should see the videos. But you should see it. Yes. Please, it's beautiful. Yeah. I hope I showed the right one. Yeah.
из всего же сделаны наши девчонки. Ла-л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 а. Из цветочков, из звоночков, из переглядок и мармеладок сделаны наши девчонки. Из железа, из стремлений и самоотдачи, из сражений сделаны наши девчонки. Из упорства, из красы, которой гордится вся нация, сделаны наши девчонки. Из синяков и тумаков, из отваги сжатых кулаков, из независимости и мастерства, из страсти и сердца и достоинства, из воли крепче кремня, из силы и огня, из свободы от чужих мнений, из свершений и достижений сделаны наши девчонки. Thanks. This is a beautiful video. Thank you so much, Rosa. When I showed this video, I always said I'm not promoting Nike. I'm not promoting any, special company. But I think words, images, and speak harder than words. So that's what I think it's very important as well, to choose and allow them to have a look and then continue exploring, because these are resources we can use to support, to follow, and to continue sharing the message. A very powerful video. Very powerful. Doesn't it so good? I know about the questions. So I think we'll come over to the remarks if that's the case. Is it okay, Rosa? Yes, of course. Yeah. Yes. So let's hear from Dr. Ruth. Your remarks, please. Thanks, Dr. Usher, and thank you for this opportunity to be part of this today, the International Women's Day, and share it with some very esteemed guests in India. Thanks very much for that. Rosa, thank you for your lovely presentation, and thank you to understand what the FIT programme is doing in India. It's really great to see India. I've always associated India as a real sporting nation since I was very small. Always enjoyed watching all your athletes participate and play in the many different events. And I've always thought of India as a great, great sporting nation. And it's wonderful to see the initiatives that are coming through from the government and from the universities and research institutes, like the ones that you're working for, and these magnificent systems coming through and it coming to fruition. At the moment, I'm working with one of your Indian students who's doing a master's program, and she's doing a dissertation, and she's researching. She's into martial arts, and she's researching what the barriers are to females participating in martial arts in India. So it's a really topical time that we've come full circle, and all the great initiatives that India are putting on, and now they're trying to also understand the different barriers and what's stopping girls and females from participating in sport is being researched and investigated, which again is great to see. But just a message to all the PE teachers and PE coaches, I know there was nearly 7,000, nearly 8,000 on the call. Don't underestimate the role that you play in inspiring the next generation and overcoming some of the issues and concerns that's been mentioned by Rosa and some of the people today about discrimination, about injustice, about inequality, about unfairness. Because when I was very little, I come from a family, I've got 3 sisters, and my family weren't interested in sport, and the person that inspired me was my PE teacher when I was about 7. And I've created a career in sport, and I've played sport, and I played soccer or football, which wasn't very popular when I was young.
And the person that lit that light for me many years ago was my PE teacher. So you, all these 8,000 PE teachers who are doing the most marvelous job and inspiring all the females and girls to participate in sport, and the boys, do never ever underestimate the role that you play in providing all the opportunities and the benefits that sport delivers. So continue doing the great job that you're doing, continue inspiring, continue acting as role models, and hats off to all of you for the great job that you do. So once again, thank you for the opportunity, Dr. Usher and Professor Rosa, and Rosa as well in the panel, and for giving me the opportunity to be part of this very important day today. And I wish you all the best for the future, all the PE teachers, and the fantastic initiatives that you do in India. Thank you. थैंक्स मैडम रोजा ये बता रही थी, मैडम आप सबको अभिनंदन कर रही है। मैडम कहती है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बता रही थी कि आपको कभी हार मानना नहीं है। हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा है, हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और मैम कहती है मैडम भी जो खेल में 7 साल की उम्र में है, उनके पी टीचर उनको उसके लिए प्रोत्साहित किया। इसी तरह से आप भी जो 7,000 टीचर्स अभी आई हैं, सब मिलके एक बदलाव ला सकते हैं। तो हमें हमेशा वो जोश हमारे में होते रहना चाहिए। So ma'am, thank you so much, because I know it's been such an odd time, but you spend your valuable time with us. Thank you so much for these inspiring words. My teachers are really, the wings have come in, so they're motivated, they're inspired. Thanks, Dr. Ruth. Dr. Rosa, your remarks, please. Yes, thank you. Now it's difficult to say something else what hasn't been said already, but I'm very proud and privileged being invited to this historical inauguration with 2 honorable ministers. That's really fantastic what you've done, Usha, to organize this on the International Women's Day. I think Rosa brought all the aspects which are important concerning the history, knowing where women and sports are coming from on the one hand, and on the others, there are factors for gender equality, what could be done. And I think she did it in a marvelous way with the method of what to choose to challenge. This was a really nice example and exercise. And when writing all the chat information from your students, I'm sure that they all get good teachers, best teachers to support the girls and to think about rights, think about safety, think about body health, think about education. And I'm really sure that your Indian PE teachers, your Indian women will do a great job with the girls in physical education and physical activity. Thanks, Dr. Usha, for inviting and being part of this really historical event. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am रोजा बता रही थी कि मैडम का नाम भी मैडम रोजा डिकेट मिलर है। हमें रूथ मैडम और रोजा मैडम भी आपका क्लास लेंगी। Both of you have a session for them too on a later date. Hope you remember the dates, Dr. Ruth and Dr. Rosa too. तो मैडम ये बता रही थी कि जो आप अब ये है कि जहाँ हमें दोनों मिनिस्ट्री आए एक साथ, ऐसा एक जो लिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है। इसमें हम जरूर आप सब बहुत अच्छा काम करें। आपका चैट बॉक्स में आपने जो डाला पॉइंट्स, उससे मैडम काफी इंप्रेस हो गई हैं। तो बोलते कि आपके भारत में जो है हमारे जो अध्यापक हैं शारीरिक शिक्षा के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सारी महिलाओं को हम सारे I was calling them all girls, I said not women, you all are girls, young girls bubbling with energy. I'm telling the morning also. So all my PTs are going to be girls who are charged with energy. I have a great band of teachers who's going to bring in great results. So thank you so much, Dr. Rosa. How about you, Dr. Rosa, President Yamako, for your message, please? Well, again, I mean, as my 2 colleagues have indicated, for us, it has been a privilege to be part of this historical occasion. And I really feel very glad because in the chat box, I read that people got enthusiastic and they are willing to challenge. And that's important, okay? So there's one comment that indicated, like, what do we do if we get mistreated? We are all have experience with that, okay? We have faced that, but we have to keep going. I mean, violence is not the solution, okay? We have to just keep going and just doing what we got to do if we believe in the powerful reasons that has pushed us to practice a sport,
to participate, to be a volunteer in an organization. If that makes us feel happy, just keep doing. I mean, nobody should be mistreated, okay? And that is a principle. And if we believe that, then we can work in order to make our environment a better place, a safer place. It's not easy, and alone we cannot do it, but we can do it together. We can get together with different, not just women's group, but also men as well, who all participate in this sort of initiative. So let's keep working, let's keep moving. It has been years and years of stereotypes, and changes won't come out of a sudden, but we need to speak about it. So this is my message. And I'm really glad that you are all involved here, and invite others that perhaps did not register, but invite others at least to listen the voices and experience of all the wonderful speaker Dr. Usha and her team have chosen in order to make this course an example, but also not just to learn cognitive in a way that to learn from the theoretical part, but also to inspire you all to be part of a bigger movement in order to make things change at your local level, and that it will impact national and international. I know it's not easy, and it hasn't been easy for anyone of here, but we need to keep going, okay? And when easy comes, easy goes. So let's keep pushing, okay? Thank you very much for this opportunity. Thanks, Rosa. मैम ये बता रही थी कि अभी एक ने किसी ने लिखा कि कुछ हम सबको मुश्किलें मुसीबतें होती हैं जहाँ हमें व्यवहार सही मिलता नहीं है, लेकिन हमें वो सब हमें ज्यादा उसके बारे में दिए बगैर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी का भी पूछा कि हम औरों को भी साथ लेके हमें एक बदलाव, हमारी आवाज ऊपर होनी चाहिए, ये एक जंग जैसा होना चाहिए। तो मैडम बोल रही थी मैं बहुत खुश हूँ इतने सारे 7000 आप और लोगों को भी, महिलाओं को शामिल करके हमें हमारे जो प्रोफेशन है, जो शारीरिक शिक्षा को और खेल को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए क्या करना, जिसकी एक जंग तरह से अगर हम आए, हम एक भारत के लिए एक बदलाव ला सकते हैं, और कभी भी हिम्मत हारना नहीं है, जो भी अच्छा करना है उसमें आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर किशोर सर। I think this on some other meeting. We come to the end of the session. So at the outset, I'd like to thank Dr. Rosa. I know it's been such an odd time. आप सब जानते हैं सुबह 4 बजे से मैडम उठ के हमारे साथ हैं। आप लोगों को मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन सुबह के 4 बजे से मैडम हमारे साथ हैं, और मैडम की वजह से हमें काफी लोगों तक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम आ पाए, ये सब मैडम की वजह से है। So ma'am, Rosa ma'am, thank you so much. I know it's been such an odd time that you were asked to come in, and we just wanted, actually I was wanting our minister to see you all, at least to see who you are. That's why I was wanting that there should be some of your representation, but Ipaskeve did it. So we are really thankful to Ipaskeve at the outset, before you, since you're heading it, because you are the ones who made it truly global. And I think this number which you see is something which is revealing, and they aren't the ones who attended the batches earlier. Please understand, for all of you, these are again fresh batches. So we have many more to cater to. So getting this big number of women, we were indeed so happy to have them. So ma'am, thank you so much. And we look forward to support from you, and hats off to, because you brought in, we know a lot of things, what's happening within us, but we don't know what's the truth, what's the reality, and we are satisfied. That's what I'm telling our participants. Thank you so much for your gracious presence, your valuable contribution, and do not leave us. Hold on to us. India needs you, the Indian ministry needs you, and the Indian youth and the women needs you. So thank you so much, madam. And you brought in these challenges. It was wonderful. And on all our my girls have got challenged. So you can see that in chat box. Thank you once again. So hats off, ma'am. Thank you, Dr. Roth. I know it's been such an odd time. Sorry for